Now this is the second page of your book, in which the heading is Reversible Reaction and Dynamic Equilibrium. डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में तो पढ़ा होगा ना 9th क्लास में. रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम. अब रिवर्सिबल रिएक्शन का आपको मैंने बता भी दिया है, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ. रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होते हैं? जो कभी भी खत्म नहीं होते, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करते हैं. Recall what happens when some liquid is placed in a closed container. You have learned about it in grade 9. बताएं मुझे, अगर आपके पास एक लिक्विड आपने क्लोज कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, ये क्लोज कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड पड़ा हुआ है, इसको क्या होगा? Some of the liquid begins evaporating. Yes, liquid will evaporate, and whenever it move upward, what will happen? यहाँ पे टकराएगा इसके साथ, and it will come back again. There are two processes. One is evaporation and the second one is condensation. Condensation. Movement of molecule upward. This is known as what? Evaporation. But when these molecules come back again, this is known as condensation. So this concept was from the class 9. Some of the liquid undergoes a physical change by evaporating. As more liquid evaporate, some of the vapors condense due to collision with the surface of the liquid. अब इसमें आपको क्या बता रहा है कि आपके पास एक क्लोज कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर लिक्विड पड़ा हुआ है. लिक्विड क्या करेगा? पहले एवापोरेट करेगा, अपवर्ड मूवमेंट करेगा, उसके बाद ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे टकराएंगे, ठीक है. आफ्टर हिटिंग द वॉल ऑफ द कंटेनर दे विल लूज देयर एनर्जी. अपनी एनर्जी क्या करेंगे? लूज कर देंगे, एंड हेंस दे विल फॉल बैक. अब ये जो फॉल बैक हो रहे हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन. अपवर्ड मूवमेंट बिकॉज ऑफ देयर हायर काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज evaporation. Eventually the rate of evaporation equals the rate of condensation. अब वो stage, that stage at which rate of evaporation becomes equal to rate of condensation, that stage is known as what? That is known as equilibrium. Yes, that is known as equilibrium. At this stage, equilibrium is established between forward and reverse reaction or reverse changes. The movement of molecules from liquid to the top, this is the forward reaction, and after hitting the wall of the container, these will recondense back, and this is the reverse reaction. And whenever these two rates, forward reaction and reverse reaction, becomes equal, that stage is known as equilibrium. Hence, यहाँ पे आप देख सकते हैं, here we have the liquid and then vapors, और इनके बीच में आप देखें डबल एरो के साथ, ये एरो जो है ये रिप्रेजेंट क्या करती हैं? These represent reversible reaction. Many chemical reactions do not reach completion. So आपको मैंने पहली इंट्रो के अंदर बता दिया कि we have various types of reactions, they never goes to completion. In such reaction, the conversion of reactant into product and conversion of product into reactant can happen simultaneously. Simultaneously means एक साथ, कि अगर रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर रहा है, पहले वो बैकवर्ड मूव करेगा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस occur at the same speed, and they occur it happens simultaneously. A reaction in which the product can react together to reform the original reactant is called reversible reaction. अब इसमें होता क्या है कि आपके पास reactant है, जैसे आपको मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, A plus D, these are the reactants. Whenever they combine, they will form C plus D, which are known as product. These are reactants and these are products. I hope आपको इस कंसेप्ट की समझ आ रही होगी. A plus B रिएक्ट करके C plus D बन गए, C plus D रिकम्बाइन होके क्या बन गए? A plus B बन गए. तो अब ये हमारे पास जो रिएक्शन है, this is known as what? This is known as reversible reaction. इसकी पहचान डबल एरोस होती है. और a reaction which proceed in the forward direction as well as in the reverse direction under the same condition is called a reversible reaction. या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि आपके पास एक रिएक्शन है जो कि फॉरवर्ड भी मूव करता है, बैकवर्ड भी मूव करता है, लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? द कंडीशंस शुड बी सेम. एंड व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस? वी हैव टेम्परेचर,
we have pressure, we have volume. ठीक है, you need to maintain these. इसमें आपके changes नहीं आनी चाहिए. These should be constant. If you will change this condition, what will happen? The equilibrium will be shifted, equilibrium will be disturbed. These reaction Okay, sir. never goes to completion. अब अगर आपके पास SLO based exam है, ठीक है, आपके पास MCQ आ जाता है कि बताएं कि इसमें से कौन सी रिएक्शंस हैं जो कभी कंप्लीट नहीं होते. आपके पास ऑप्शंस हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, बोथ A and B, और एक और भी ऑप्शन दे दिया जाता है. तो अगर आपने ये पढ़ा होगा कि इरिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, सो आप इजीली उस क्वेश्चन को पिक कर सकेंगे, क्योंकि ये ट्रिकी टाइप के SLO बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास इस तरह के आ सकते हैं. तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप बेशक आप अपनी बुक में अंडरलाइन भी कर लें, जो आपको मैं साथ बताता जाऊँ. ठीक है, तो आपको ये हेल्पफुल होंगे. All reversible changes, physical and chemicals, occur simultaneously in both the direction. Both direction mean forward as well as backward direction. The double arrow in the chemical equation shows that the reaction is reversible. आपको मैंने पहले बता दिया, as I have told you before, if a reaction is written with this arrow, single arrow, this means it is irreversible reaction. But if you see the double arrows, it means this reaction is reversible reaction. It means it can proceed in both forward and reverse reaction. So there are two types of changes. One is the physical and chemical changes. Whenever reaction move forward or it come backward, then the physical and chemical changes will occur simultaneously. Same changes इसके अंदर exist करेंगी. Now there are various examples. अभी आपको जो मैंने general example दी A plus B और C plus D, इससे हट के जो chemistry की examples हैं वो हमारे पास कौन सी हैं? We have a sulfur dioxide, which is a gas. Now this small g represent the state of matter. We have 4 state of matter: solid, liquid, gas and plasma. Here we have oxygen. Whenever sulfur dioxide react with oxygen in the presence of V2O5. What is V2O5? Vanadium pentaoxide. This is vanadium pentoxide and it act as a catalyst. Catalyst का पता है? What is catalyst? Yeah, this speeds up a reaction. Yes, exactly. And at the end of the reaction, it remains unaltered, unchanged. ठीक है, change नहीं होता end of the reaction में. Anyways, this V2O5, which is known as vanadium pentoxide, is act as a catalyst, and the conditions are 450 degrees centigrade. This is what, this is temperature, and this is atmospheric pressure, 200 atm. Atm is the unit of pressure. Now under these conditions, when sulfur dioxide react with oxygen, it will form sulfur trioxide. This is sulfur trioxide. Now this is a reversible reaction. अगर आप इसको पढ़ते हैं left to right, so these would be your reactants, while sulfur trioxide is the product. ठीक है, अब इसके ये भी हो सकता है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड रिकम्बाइन होकर क्या बना ले, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना ले. अब ये एग्जांपल्स हैं जो कि आपको याद करनी होती हैं. Then we have another example of formation of ammonia. This is the formation of ammonia molecule. Now how ammonia molecule is formed in the industries? Whenever nitrogen and hydrogen molecule react, they form nitrogen. There is a mistake. This is 2 moles of NH3. Please make a correction in your book as well. This is the formation of ammonia. And Okay. we have an iron, and this iron would act as a catalyst. And the different conditions are given. 400 degrees centigrade is the temperature, 200 atmospheric pressure would be required to form ammonia from nitrogen and hydrogen. I have a question. Why we have written N2? Why not only N? Because it's a diatomic molecule, it does not exist in the form of a single molecule. Reason? Because it's not stable as a single molecule. Yes, as a single atom, it is not stable. But do you know what is the atomic number for nitrogen? 7? Yeah. 1s2. Electronic configuration would be 1s2, 2s2, and 2p3.
it means we have 2 electron in its first shell and 5 electron in its valence shell. So it means it will make a triple bond with another nitrogen molecule. Now in this case octet is complete. If its octet is complete, it means it is stable. So yes, you are right. That is why we write N2. Same is the case for hydrogen. Hydrogen have only one electron. So whenever two hydrogen atom combines together, they form a covalent bond, and hence their duplet it will get stabilized. अच्छा, इसमें क्या होता है कि हमारे पास इमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है. अब यहाँ पे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर रिएक्टेंट्स व्हाइल इमोनिया इज द प्रोडक्ट, और इसमें इमोनिया जो है वो रिकम्बाइन हो सकते हैं. और उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड. दिस इज नाइट्रोजन. यहाँ पे फिर अगेन मिस्टेक है. फॉर्मेशन किस चीज की हो रही है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की. तो ये हमारे पास नाइट्रोजन है. दिस इज नाइट्रोजन. या आप अपनी बुक में करेक्शन कर लेना साथ में. अच्छा जी, नाइट्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क, it will produce nitrogen dioxide. Again, as you can see the double arrows in this particular chemical reaction as well. Hence, these three are the example of reversible reaction. अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई बताएं कोई reversible reaction की chemistry में कोई example बता दें, तो आप क्या कहोगे? आप ये इसमें से कोई से एक दो एग्जांपल आप उसको बता सकते हो. अच्छा, अगर आपको मैं डेली लाइफ की एक एग्जांपल दूं ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है. अब बारिश हो गई है तो अब पानी होगा, पानी नीचे की तरफ आ जाएगा इस तरह खुद ब खुद. लेकिन अगर आपको कोई कहता है कि इस पानी को ऊपर लेके जाएं, तो आप कैसे लेके जाओगे? ऊपर से तो नीचे आ गया है, बट क्या ये ऊपर जा सकते वापस? No, not in the same way. हाँ, नॉट इन सेम वे. आपको इसके लिए मोटर कोई लगवानी पड़ेगी, तब जाके ये वापस जाएगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा. तो इसका मतलब है कि ये जो पानी नीचे आ गए बस सिर्फ यूनिडायरेक्शनल है, नीचे आ गए, ऊपर ये वापस नहीं जा सकता. सो ये आपके पास जो पहले है कि नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर आ जाता है. एनीवे, दिस वाज जस्ट अ डेली लाइफ एग्जांपल. सो ये तो था आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन के अबाउट. तो इसमें if you have any question, any doubt, any query, you may ask. Now, molecules of sulfur dioxide and oxygen react to give sulfur trioxide. So chemical reaction हम लोगों ने लास्ट जो पेज था उसके अंदर ऑलरेडी देख भी लिया है कि सल्फर डाइऑक्साइड when react with oxygen it forms sulfur trioxide. Molecule of sulfur trioxide decompose to give sulfur dioxide and oxygen. Like if we write it like this, sulfur trioxide can decompose to give sulfur dioxide and oxygen. This is sulfur dioxide, this one is the oxygen, this is sulfur trioxide. Same, this is sulfur dioxide and oxygen. What type of molecules are present at equilibrium? अब ये आपसे पूछ रहा है कि ये अगर आपके पास, फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज द पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, ठीक है, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. Now, if whenever equilibrium would be established in between the reactant and product, then what type of molecule would be there? It means all of these. In the first reaction, from left to right, sulfur dioxide and oxygen produces sulfur trioxide. देखें, अगर आप यहाँ पे देखें सल्फर डाइऑक्साइड से क्या बन रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से मिलके क्या बन रहा है? सल्फर ट्राइऑक्साइड. इन द सेकंड रिएक्शन, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, डिकम्पोजिशन, सल्फर डाइऑक्साइड डिकम्पोज इनटू सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. यहाँ पे देख सकते हो सल्फर डाइऑक्साइड डिकम्पोज हो गया. डिकम्पोज का मतलब टूट जाना, into sulfur dioxide and oxygen. What reaction is called forward reaction and which reaction is called reverse reaction? हाँ जी बताएं. The reaction of sulfur dioxide with oxygen into sulfur trioxide is a forward reaction. Exactly, this is a forward. The decomposition of sulfur trioxide into sulfur dioxide and oxygen is the backward reaction, reverse reaction. And reverse reaction. Very good. Initially, there is no sulfur trioxide, so the rate of reverse reaction is 0. अच्छा, आप मुझे बताओ कि फॉर एग्जांपल आपके पास जग है ना, आपने जग के अंदर डाल दिया शुगर और साथ में उसके अंदर लेमन भी डाल दिया, साथ में वाटर भी डाल दिया. क्या इसको आप शरबत कह सकते हो? No sir. नहीं कह सकते. लेकिन अगर आप इसको शेक करते हो, वाटर के अंदर आप शुगर को डिसॉल्व करते हो
कुछ टाइम के बाद उससे प्रोडक्ट बन जाएगा ना, उसको आप क्या कहोगे, उसको शरबत कहोगे. So exactly Yes, sir. same is the case with the sulfur trioxide, that initially there is no sulfur trioxide, but as the time passes, so what happened? The reactants sulfur dioxide and oxygen will react together and they will form sulfur trioxide. The rate of forward reaction is highest due to the high concentration of reactant. As the reaction proceeds, the concentration of reactant gradually decreases and the rate of forward reaction. अच्छा, इसको समझने के लिए we have a graph. Let me zoom it more so that it should be more clear to you. Now this is the graph. As you can see that this is sulfur dioxide and this one is oxygen, while this one represents sulfur trioxide. When the time is 0, these represent time 0, 2, 4, 6 and 8. Same is the case with this 0, 2, 4, 6 or 8. These represent concentration. और concentration की unit क्या होती है? Mole per decimeter cube. And time, it may be in second, maybe in hours and so on. For example, if you take it in seconds, at 0 second, the concentration of sulfur trioxide would be 0, and the concentration of sulfur dioxide would be maximum. Concentration of sulfur dioxide would be maximum, concentration of oxygen will also be maximum. But as the time proceeds, like in 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds, 5 seconds and infinity level, then what happened? The concentration of sulfur dioxide is going to decrease, as you can see in the graph. Graph क्या कर रहा है? It is decreasing, declining. Yes, sir. Same is the case with oxygen. Why it is declining? Because sulfur dioxide is combining with oxygen and it is converting into sulfur trioxide. And same is the case with sulfur trioxide. The concentration of sulfur trioxide with the passage of time increases. But a time would come that the rate of forward and the rate of backward reaction will become equal. And at that time, what happened? The concentration will be equalizes. As you can see, they have written that the rate of forward reaction is highest due to the high concentration of reactant. But as the time passes, the concentration of reactant will decreases and concentration of product will increases. But a time would reach when the concentration of reactant and product will become equal, and that point is known as chemical equilibrium. So I hope so आपको इसकी समझ आ गई होगी. Then we have a chemical equation. मेरे ख्याल से कर लिया. Sulfur dioxide is reacting with oxygen and it is formed sulfur trioxide. Now this is the forward reaction, and as you told that the decomposition of sulfur trioxide is the reverse reaction. As the concentration of sulfur trioxide increases, a small amount of sulfur trioxide slowly decomposes to sulfur dioxide and oxygen. कहता है कि जैसे हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही होती है तो रिएक्शन क्या कर जाता है, बैकवर्ड मूव कर जाता है. दिस मींस रिवर्स रिएक्शन हैज बिगन. इसका मतलब क्या है कि रिवर्स रिएक्शन, अब जब सल्फर ट्राइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो रिएक्शन क्या करेगा, पीछे की तरफ मूव करेगा. Yes, sir. इस रिएक्शन सल्फर ट्राइऑक्साइड एक्ट एज ए रिएक्टेंट and produces sulfur dioxide and oxygen. So the reverse reaction is like this. As the concentration of sulfur trioxide becomes higher, the reverse reaction speed up. देखिए आपके पास इनिशियली क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन टाइम के साथ क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है. लाइक हम कहते हैं कि एट टाइम जीरो द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज 10, while sulfur trioxide concentration is 0. But as the time passes, it means time become t, means 1 second to 3 seconds. What happened? The concentration of this would decreases like 5 and it would become also 5. So at this point, what happened? Equilibrium will be established. The concentration of both would be same, and if the concentration of reactant is 5 and the product like sulfur trioxide is 8, what will happen? The backward reaction
will be Will speed begin. up, yes, will begin and with a greater speed, so that the concentration of both the reactant and product becomes again 5 5. It means so that the equilibrium should be re-established. Okay. As the concentration of sulfur dioxide become higher, the reverse reaction speed up. Eventually, the two rates become equal. At this stage, trioxide decomposes to sulfur dioxide and oxygen as fast as sulfur dioxide and oxygen produces sulfur trioxide. So कहता है कि जब हमारे पास रेट इक्वल हो जाएंगे, so जिस स्पीड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं, उसी स्पीड के साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा. At this stage, the reaction is said to have reached equilibrium state. So ये जो हमारे पास स्टेज आ गई है, इस पे हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम जो है वो established हो चुकी हुई है केमिकल रिएक्शन के अंदर. A state of chemical reaction in which forward and reverse reaction takes place at the same rate is called chemical equilibrium. So किसी भी chemical reaction की वो state जहाँ पे rate of forward reaction becomes equal to rate of reverse reaction, that is known as chemical equilibrium. Okay, sir. Chemical equilibrium is a dynamic equilibrium. This is because reaction do not stop when they come to equilibrium. अच्छा, जो chemical equilibrium होता है ना, it is also known as dynamic equilibrium. अच्छा, इसकी एग्जांपल इस तरह है, आप न्यूज़ तो देखती होंगी ना टीवी पे. Yes, sir. कभी आपने सोचा है कि वो जो न्यूज़ होती है, वो नीचे जो पट्टी होती है वो चल रही होती है, वो स्टैटिक नहीं होती, चल रही होती है, मूव कर रही होती है. Yes, sir. तो इस तरह ये भी क्या है कि डायनामिक का मतलब ये एक होता है स्टैटिक, जो बिल्कुल एक चीज रुकी हुई हो. इस तरह आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त आपकी जो स्क्रीन है लैपटॉप की, मोबाइल की, बिल्कुल स्टॉप हुई है, ये स्टैटिक है. लेकिन जब आप न्यूज वगैरह देखते हो, आपको ऊपर देखते हैं आप, नीचे वो न्यूज चल रही होती है कि आज ये हो गया, आज वो होगा, आज वैसा हो गया. वो क्या है, दैट इज डायनामिक, जो मूव कर रही होती है. सो सेम इज द केस विद इक्विलिब्रियम एज वेल, कि जब कभी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होता है तो जो रेट होता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड का, वो कभी स्टॉप नहीं होता. जितने रिएक्टेंट फॉरवर्ड मूव कर रहे होते हैं, उतने प्रोडक्ट रिकन्वर्ट होकर रिएक्टेंट दोबारा से बना रहे होते हैं. हिंस दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम.